fine children. We are solving objectives, right? Now moving on to the next chapter, and that is chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Alright, first, and write in short, linear equation in two variables. What is its standard form? Two variable, हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट है, इसका भी, and then constant term प्लस कर दो equal to 0. Now this is equation, so equal to 0. This is linear equation in two variable in its standard form under the condition a square plus b square not equal to 0. या लंबा स्टेटमेंट लिख सकते हैं where a and b are not simultaneously equal to. याद आया? याद आया? So ax plus by plus c equal to 0. This is a linear equation in two variables in its standard form where a square plus b square is not equal to 0. Now if you want pair of linear equation in two variables, तो xy इसका कोएफिशिएंट a1 b1 c1, दूसरे का a2 b2 प्लस कर equal to 0, plus कर दो. This is pair of linear equation in two variables, and this type of pair of linear equation in two variables we solve by 4 methods, isn't it? Number 1, substitution method. Number 2, elimination method. Number 3, cross multiplication method, and number 4, graphical. Right? But those are of 2 or more marks. We are going to see only the objective questions. Alright. Now, there are few conditions by which, without solving the pair of equation, you can tell whether that pair of equation has unique solution, infinite solution, या तो no solution. Alright? Okay. पहले जो भी pair of linear equation in two variables होते हैं, they are of two types: consistent pair of equations, consistent pair of linear equations, या बोलो non-consistent pair of linear equation. Okay, consistent या non-consistent. Instead of non-consistent in the textbook, the word given is inconsistent pair of linear equation. Non and inconsistent will be the same, but in your textbook, inconsistent is. Now, inconsistent means no solution, or consistent means there is a solution. There is a solution. If a pair of linear equation has solution, then दो प्रकार के होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन या तो, यू अंडरस्टैंड, अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन हो या वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और पेयर ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ, बोलिए ना. और अब यूनिक सॉल्यूशन हो, then such pair will have distinct intersecting lines. You know, each linear equation in two variables is represented graphically in the form of a line. Its graph is a straight line. So if you have pair of equations, you will get pair of lines. जिसका solution unique हो, उसकी pair of lines कैसी होगी? Distinct intersecting lines. Distinct intersecting lines. Is that clear? Infinite solution होगा तो या coincident lines या coinciding lines, coincident line, और जिसका solution ही नहीं है वो parallel lines, parallel lines. इसकी लाइन होगी like this, distinct intersecting lines. ये होगा उसका solution. इसकी this is L and this is M. Both यही लाइन L है और यही लाइन M है. They are overlapping, and here the two lines will be parallel. Is
that clear? Understood, children? Sure. Children, the pair of equation, a pair of linear equation in two variables, which is having infinite solution, is also called dependent pair. It is also called dependent pair. Consistent pair को dependent pair तब कहा जाएगा when it has infinite solution, and if it is having unique solution, message book ले अपन करें. Okay, children, once again we had a break. I was talking about this dependent pair. Dependent pair is also called consistent pair of linear equation. But जिसका yes solutions infinite हो, it is called dependent pair. Some way objective में आ जाए तो याद रखना. Okay. Children, one very important objective questions can be asked, all right, from this chapter, and that is a two-digit number can be written as 10x plus 1. Tens place and a units place. Tens place x and units place y. Then that is 10x plus y. Do you remember this? This is original number, correct? I am going to make new number by interchanging the digit. So that will become 10y plus x. That's, you are not as attentive as you should be. And you are in the mood of playing mischief. Okay. Plus, सही पकड़ा है ना मैंने? हाँ सही है. Please, sum of two-digit number and the number obtained by interchanging the digit. क्या मिलेगा? 10x plus x, 11x. 10y plus y, 11y. So that is 11 times x plus y. This indicates it's a multiple of 11. Multiple of 11. अब मैं यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकता हूँ. पहला, the sum of a two-digit number and number obtained by interchanging the digit is always a multiple of 11. True or false? Is always a multiple of 9. True or false? False. All right. The sum of two-digit number and a number obtained by interchanging its digits is 120. True or false? We are talking about sum. It has to be a multiple of 11. 120 तो multiple of 11 है ही नहीं. So ये sum हो ही नहीं सकता है. False. देखा true or false कैसे बनते हैं? फिर लिख के आते हैं. Be careful. Okay. So that was the sum of a two-digit number and number obtained by interchanging the digit. It is always multiple of 11. The sum is always a multiple of 11. वो sum था. अब I am going to take difference. Please pay attention. So this time minus की वजह से bracket आएगी. 10x minus x plus y minus 10y. 9x minus 9y. So 9 times x minus. This is an indication that it is a multiple of 9. The sum of two-digit number, the positive difference of a two-digit number and a number obtained by interchanging the digit is always a multiple of 9. True or false? Is always a multiple of 11. True or false? Difference is not. The difference, positive difference of a two-digit number and number obtained by interchanging the digit is 90. 90. True or false? Okay, 90 is a multiple of 9. Is 99? True. 40.
That clear? Understood? Fine, children, the last concept of this chapter, and then certain questions based on this concept. A definite question, objective question, it will be asked in your paper. You might find in both the papers. In one paper, basic paper, thoda easy hoga, or in standard paper, it will be tough, but I'm damn sure it will be asked in both the papers. चलिए, what is that? आपको याद है मैंने ऐसे कहा था यूनिवर्सिटी UNI, ये U for unique, U for N for and I for very good. अब देखो फर्स्ट A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 सारे में है A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2. In first case, unique, दोनों yes, दोनों not equal. In the second case, first not equal, sorry, first is equal, but the next is not equal. और इसमें दोनों equal. Do you remember that? Yes. Children, ये cross multiplication भी समझना. A1 B2 minus A2 B1 not equal to 0. इसको ऐसे भी लिखते हैं. A1 B2 minus A2 B1 not equal to 0. इसको ऐसे लिखते हैं. B1 C2 minus B2 C1 not equal to 0. और लास्ट वन A1 C2 minus A2 C1 not equal to 0. तीनों not equal आया ना, so that is unique. बोलो ये A1 B2 minus A2 cross multiplication B1 is equal to 0. Second not equal B1 C2 minus B2 C1 not equal to 0. और third one A1 C2 minus A2 C1 not equal to 0. दो नॉट इक्वल आए, पहला इक्वल, सो दैट इज नो सॉल्यूशन. और यहाँ A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0. B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 0 और A1 C2 माइनस A2 C1 इज इक्वल टू 0. तीनों इक्वल, सो दैट इट हैज इनफाइनाइट. ओके, ये पहले भी बता चुका हूं. यूनिक सॉल्यूशन मतलब डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन. नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस कोइंसाइडिंग लाइंस. आर यू गेटिंग मी? नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट लेट्स सी सम क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ काव्या इज ऑन ड्यूटी. यस काव्या, रीड. The pair of linear equation x plus y minus 4 equals to 0 and 2x plus ky minus 3 equal to 0 has no solution, then find the value of k. Did you all hear? Some of you were talking. A pair of linear equation is given to you in two variables and this pair has No solution. no solution. The pair has no Solution. बाजू में कर देते हो. U and I. Not equal, not equal. Equal, not equal. and equal नहीं लिख देते हैं, right? The given pair, बेटा give me the pair of linear equation that X is. plus y minus 4 equals to 0. All right. 2x plus ky minus 3 equals to 0. Right. ये standard form ही होने चाहिए. You should have standard form only because you need to pick up A1, A2, B1, B2, C1, C2. All right? तो standard form करना जरूरी है. All right. No solution. No solution. बोलो ये वाला. So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon Is not equal to आएगा. All right. चलिए बोलिए what is A? Okay, ऐसे ही लिखूंगा मैं. This is A1, this is B1 and this is C1. This is A2, this one is B2 and this is C2. बोलो A1 1 upon A2 2 is equal to B1 1 B2 8 is not equal to C1 minus 2 और minus. ये जाने दो, हमें तो K की वैल्यू ढूंढनी है ना.
k की वैल्यू ढूंढनी है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, k is equal to 2. Then what is the value of k? K equal to 2. What is k not equal to? ऑप्शन में ऐसा दिया है. Then you pick up this 1 upon k is not equal to minus 4 upon minus plus. So reciprocal कर दो, k is equal to 3. Not equal to. k cannot be equal to 3 upon 4. k की वैल्यू ये चलेगी, लेकिन k की वैल्यू 3 upon 4 नहीं चलेगी. Okay? Next. Anything can be asked. Next, beta Pair read. of linear equation Again a pair of linear equation. has infinitely many solutions. This time infinitely many solutions. Find the value of k. चलो first equation from the pair. 2x minus y equals to 5. देखो ये equal to 5 दिया है. I want standard form. So बोलो यहाँ ही लिख देता हूँ. 2x minus y minus 5 equal to 0. दूसरा 6x plus ky equals to 15. 1 5. Yes. Okay. So 6x plus ky minus 15 equal to 0. ये अपना a2, b2, c2. ये अपना a1, b1 और c1. और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. बोलो a1 upon a2 2 upon 6 is equal to b1 upon b2 minus 1 upon k c1 upon c2 minus 5 upon minus 5 upon minus ये ऊपर नीचे माइनस माइनस कर सकते हैं भाई. તમે આનો કે આનો વેલ્યુ સેમ જ આવશે કે બે ઇક્વલ છે. અહીંયા ઇક્વલ ને નોટ ઇક્વલ નથી. So if you pick up this cross multiplication 2k is equal to minus 6. So k is equal to minus 3. Okay? आप ये करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5k is equal to minus 50. 5 1 5 all the same here. So the value of k is okay. चलिए next. The pair of linear equation in two variables has unique solution. Then This find- time unique solution. इस बार equal to नहीं आएगा, दोनों में inequality ही है. Yes. What is the first equation? x plus ky equals to 0. Then उसको 2x स्टैंडर्ड फॉर्म करना. x plus ky plus 0 is equal to 0. Next. 2x minus y equals to 0. 2x minus y is equal to 0. 2x minus y plus 0 equal to 0. This is a2, b2, c2. a1, b1, c1. कोएफिशिएंट लेना है. चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. सॉरी यूनिक ना. So a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. बोलो 1 upon 2 not equal to k upon minus 1 not equal to 0.0 का कोई मतलब है. हम इसको ही लेंगे. बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन minus 1 not equal to 2k. So minus 1 upon 2 not equal to k. So k is not equal to minus 1 upon ये रिजल्ट. आपको ऑप्शन दिया. ओके. Now option you choose. Next. If 3x plus y equals to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y That is another linear equation in two variable. equals to 2k plus 1 is inconsistent, then k equals Pair of equation, the solution is inconsistent. This is inconsistent pair of linear equation. मतलब no no solution. solution. मतलब no solution. लेकिन यहाँ थोड़ा complications है. बोलो 3x plus y equals to k. 1 sorry. 1. 1. Okay. So 3x plus y minus 1 equal to 0. Next. 2k minus 1 into x Into x. ये complicated है. plus k minus 1 into y equals to 2k plus 1. ये very interesting है. Very interesting. बोलो 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y. अब ये तो दो टर्म है चिल्ड्रन. ये दो टर्म है तो उसको ब्रैकेट बनाया और पूरा ब्रैकेट ये बाजू लाया माइनस 2k plus 1 माइनस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. दिस इज योर a2 b2 c2 और a1 b1 c2. This pair of
इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मैंने पहले ही बताया, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन मिडल वाला इक्वल टू और नॉट इक्वल टू a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। बोलिए a1 क्या है 3 अपॉन a2 क्या है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 क्या है 1 b2 क्या है k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 क्या है माइनस 1 और c2 माइनस ऑफ 2k प्लस 1। माइनस माइनस प्लस हो जाए। बट आई थिंक आपको इक्वल टू का पूछा है तो ये लो, और नॉट इक्वल टू का पूछा है तो दो ऑप्शन है, ये ले सकते हैं या फर्स्ट एंड लास्ट। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 into 1। सो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। सो k इज इक्वल टू 2। k इज इक्वल टू नेक्स्ट। The area of triangle formed by x equals to 3, y equals to 4 and x equals to y is dash. Now this is interesting. The area of triangle formed by 3 lines. X is equal to 3. x equal to constant. It will be parallel to y axis. Next, Y equals to 4. it will be parallel to x axis. X equals to y. हाँ, ये तो दोनों है, वो एक ऑब्लिक लाइन होगी, ऑब्लिक लाइन होगी। ऑलराइट, अब देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। आई एम जस्ट शोइंग यू, आप सिर्फ याद रखो और एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखना। राइट, x इक्वल टू 3 कहा है 3, ये लाइन इज x इक्वल टू 3, उसका ग्राफ 9th में ये सब पढ़ा है। y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 यहां है y एक्सिस पे, और ये लाइन जो x एक्सिस को पैरेलल है, दिस इज y इज इक्वल टू 4 लाइन, और x इक्वल टू y, x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी 3। भाई x की वैल्यू चूज करो तो y की वैल्यू मिलती जैसे ना। सो 1 1 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 4 सॉरी 1 1 2 2 3 3 3 3 है ना यहाँ, 4 4 4 यहाँ, ऐसे यू विल गेट दैट लाइन। ओके, ऐसे लाइन मिलेगी ना? मिलेगी कि नहीं? ऑलराइट, सो तीनों आई शुड हैव ड्रॉन दिस ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन ड्रॉ। सो ब्लैक लाइन इज व्हाट? x इज इक्वल टू y। ब्लैक लाइन का इतना पार्ट देखो, रेड लाइन का इतना पार्ट देखो, और ब्लू लाइन का इतना पार्ट देखो। Those 3 lines are forming a triangle, and of course it's a right angle triangle. What is the area of that? चलिए, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। और ये राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेसियल ओवर और अल्टीट्यूड लो, सो दैट इज half unit square. So area of triangle formed by x equal to 3, y is equal to 4, and x equal to y will be half square unit. चलिए next. A cyclic quadrilateral Please. A cyclic quadrilateral has angle A equals to 2x minus 1, angle B Please, equals to 1. जरा ध्यान दो, please. A cyclic quadrilateral, that means a quadrilateral whose all 4 vertices lie on the बोलो। circle. So A B C D, चलो बोलिए from the beginning। Angle A equals to 2x minus 1. 2x minus 1, Angle B equals to y plus 5. y plus 5, Angle C equals to 2y plus 15.
Yes. and angle D equals to 4x minus 7. 4x minus 7. Children, do you know the result of cyclic quadrilateral? Both the pairs of opposite angles are supplementary. Angle A plus angle C is equal to, so देख लो 2x minus y, that is 8. 2y plus 15, that is C, and that is 180. So 2x plus 2y plus 14 is equal to 180. So 2x plus 2y is 166. 2 common, x plus y is 166. So x plus y is 83. ये पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन बोलो. Angle B plus angle D, I am writing directly now. Y plus 5 and 4x minus 7. That is also 180. So 4x plus y minus 2 is equal to 180. So 4x plus y is equal to 180. Minus 2 both side again. And then you solve. So you will get. Find x plus y. तो मिल ही गया. Find x plus y. तो x plus y is मिल गया. Then x equal to dash and y equal to dash. तो दोनों को सॉल्व करना है. बट यहाँ फाइंड x plus y, तो x plus y is 80. आगे बढ़ने की जरूरत. But sometimes they can ask you, then x is equal to dash and y is equal to dash. Is that clear? चलिए next. In triangle ABC, Yes. angle C equals to 3 angle B equals to 2 into angle Now A plus angle it was cyclic quadrilateral. This time it is triangle ABC. Yes. बोलिए in triangle ABC, angle angle C is equal to 3 angle B 3 times measure of angle B equals to 2 into 2 times measure of angle A plus angle B. plus measure of angle B. Children, ये ट्रांजिटिविटी है. हम कह देंगे that is equal to, एक तो मिल गया, ये मिल गया. What is angle C? X. चलिए अब इसको लो. 3 times angle B is x. So angle B is x by 3. भाई ये भी मिल गया in terms of x. x by 3. अब ये ले लो. 2 times angle A plus angle B is equal to x. So angle A plus angle B is x by. Now angle B we know. Put the value. Angle A plus x by 3 is equal to x by 2. So angle A is equal to x by 2 minus x by 3. LCM is 6. 3s are 2s are 3x minus 2x. So that is x by 6. So this is x by 6. And then you use the identity. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. So x by 6 plus x by 3 plus x is equal to 180. LCM 6. 1, 2, 3, x plus 2x plus, of course 6. 6x is equal to 180. So that gives me 9x upon 6 is equal to 180. 9 ones are 2s and 0s. So x equal to 6 into 20. So value of x is 120 and then you can find measure of all the angles. Is that clear? जो भी ढूंढना है. Next. The pair of linear equation in two variables are given. Find the value of x and y. Look here, this is also very important. First, bolo 23x 23x minus 29y minus 29y equals to 98. 98. And 29x 29x minus 23y 23y equals to 110. 110. याद करो इसको सर क्या बोलते थे? VIP. Special pair या VIP. Special pair of linear equation. You can see this 29, 29 and 23, 23. Coefficients are ordered. आपको कुछ नहीं करना है. Equation 1 plus 2 और equation 1 minus 2. Okay? ट्राई करो पहले रफ वर्क में करो. ये टोटल करोगे तो सेम साइंस टोटल 52x और प्लस सेम साइंस टोटल 52y और माइनस टोटल 208. 52 is common, x minus y is equal to 208. So x minus y is 208 divided by 50. 1s and 4s are. So x minus y is equal to. So what is x minus y here? x plus y ढूंढना हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये 1 plus 2 किया ना. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है देखते हैं. This becomes minus, this becomes plus, and this becomes difference.
6x with minus sign. Difference 6y with minus sign. Or difference 12 with minus. Minus 6 कॉमन ब्रैकेट में x plus 1 और minus minus plus 1 जाएगा. So x plus y is equal to x. Difference 4 और sum 2, उसका मतलब दो में से एक नेगेटिव इंटीजर. ऑलराइट, तो प्लस पूछा तो ऐसे करेंगे, डिफरेंस पूछा तो ऐसे करेंगे. आई थिंक सेकंड क्वेश्चन वही. आई एम जस्ट गिविंग यू पेयर ऑफ इक्वेशन, आप प्रूव कर लेना. बोलिए. 99x plus 101y equals to 499. 101y plus y नहीं x. x plus 99y equals to 501. बस फाइंड व्हाट x plus y क्या x minus y. ये हुआ ना? अच्छा, सो फाइंड x plus y या फाइंड x minus y. You understand? So 1 plus 2 and 1 minus 2 से मिल जाएगा. So that's all in the third chapter. So today है अरे चलो हमारा का तो सन्ने बना रूप रहा होगा. So this is constant है, you know आप लोग. चलो बोलो. The sum of ages of capital F ये and सम B. नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, आरडी शर्मा बुक में भी नहीं है. ऑलराइट, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ऑब्जेक्टिव बोलो. The sum of ages of F, M and D. Father, mother and daughter. The sum of ages of father, mother and daughter. After 5 years will Oh, 5 present date तो लकी देवाल. Present date. પછી after be 5 years 5 years. will be 120. और जो पहली कंडीशन है ना, the sum of ages of father, mother and daughter after 5 years. 5 years. F plus M plus D. ये रो में. That is 1. 20. Okay. Hence, the sum of ages after 3 years ago was. What was their age? Sum of ages 3 years ago. 3 साल पहले कितनी एज थी? देखो मैं ये A, B और C बता रहा हूं प्रेजेंट एज. तो 5 years after A plus 5 होगा. 5 years after B plus 5 होगा. और डॉटर की C plus 5 होगा. तो यहां लिख देता हूं A plus 5 plus B plus 5 plus daughter की C plus 5 is 120. So this gives me A plus B plus C plus 15 is 120. So A plus B plus C is equal to 105. ये एक मुझे रिजल्ट मिल रहा है. A plus B plus C 120 में से 15 माइनस कर मिला. अब कह रहे हैं कि टोटल एज आफ्टर 3 years ago. बोलो प्रेजेंट एज A, so A minus present age B, so B minus present age C. तो बिफोर 3 years. और टोटल एज ढूंढो उसकी. So A plus B plus C minus this will be the total age of father, mother and daughter 3 years ago. But now we have already got the result. 100 and A plus B plus C minus 9. So 5 जाएगा और 4 जाएगा. 96 years. So the total age of father, mother and daughter 3 years ago was 96 years. So ऐसे कुछ questions हो सकते हैं. Follow this. ये I'll try to get some more sums. देखेंगे आगे. At least I can give you on the group. Okay. So that's all. Today we did actually objectives of 3 chapters, and that's all. Goodbye.